Hello, bachcho. So let's read this question. What do you mean by right to constitution remedy? What kind of writs can be issued under this right? Explain them each. तो बेसिकली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की तो हमें पता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक फंडामेंटल राइट है. सो द की कॉन्सेप्ट विल बिकम फंडामेंटल राइट्स. Now let us discuss the answer furthermore. So the right to constitutional remedies, right to constitutional remedies is a fundamental right in the Indian Constitution. Is a fundamental right in the Indian Constitution. So it allows citizen to approach the Supreme Court of India, approach Supreme Court, or in some cases High Court. High Court to seek legal remedies when their fundamental rights are violated. Fundamental rights are violated. So this right is vital for safeguarding individual freedoms. बेसिकली जो भी और फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एक और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. जैसे अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है और आपको वो दिख रहा है कि वो वायलेट हो रहा है, देन यू कैन सीक हेल्प थ्रू कोर्ट्स or judiciary of India, and that will protect your fundamental rights, safeguarding इंडिविजुअल फ्रीडम्स. तो अगर गवर्नमेंट राइट्स बना रही है या फंडामेंटल राइट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होगा या फिर कुछ चेक करने के लिए नहीं होगा, so it doesn't make any sense. So for that we have right to constitutional remedies. So under these rights 5 types of writs can be issued. Under these rights, or we can say under this right, 5 types of writs can be issued. अब अगर आपको पता नहीं है रिट्स का क्या मीनिंग होता है, तो रिट एक बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है जो कि कंटेन करती है ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट और टू द गवर्नमेंट इशूड. बेसिकली जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती है या फिर देती है, इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड फॉर द गवर्नमेंट, or we can say to the government. So basically, writ is a formal document containing an order of the court to the government issued only by High Court or Supreme Court. So ऐसे कौन से writs हैं जो कि इस राइट में प्रोवाइड किए गए हैं? So let's talk about the first writ, which is habeas corpus. So what is this habeas corpus? So it is used to secure the release of persons unlawfully detained. जो भी जिस भी इंसान को डिटेन किया गया है अनलॉफुली, उसको रिलीज करने में ये हेल्प करता है. इट इज यूज्ड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड. देन कम्स सेकंड हमारा है मैंडेमस. मैंडेमस की अगर हम बात करें, so we have it compels the public officials to perform their legal duties. Compels the public officials to perform their
legal duties. Then comes our third, which is prohibition. These are the writs that is mentioned under the fundamental right of constitutional remedies. फिर हमारा आता है prohibition. तो prohibition, it basically prevents lower courts or tribunals from exceeding their jurisdiction. We know above all comes our high court. So prohibition compels or prevents lower courts or tribunals from exceeding their jurisdiction. The jurisdiction. Now let us talk about the fourth point. अगर हम fourth point की बात करें तो fourth point is certiorari. Certiorari. And under this comes quashes decisions of lower courts or authorities that violate legal principles. Quashes decisions of lower courts and authorities सो बेसिकली इस रिट के अंदर जो भी डिसीजंस हैं दे आर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड और वी कैन से रिजेक्ट एज इनवैलिड of lower courts and authorities that violate legal properties, or we can say principles that violate legal principles. Now let's talk about the fifth point. अगर हम fifth point की बात करें तो fifth point is our quo warranto. Quo warranto. अब ये हमारा रिट है जो कहता है questions questions the legality of a person holding a public office. So it basically questions the legality of a person holding public office. So ये सारे कुछ writs हैं that empower the judiciary to protect citizens' fundamental rights and ensure the government acts within the bounds of the law. So fostering the rule of law and individual liberties. Basically ये writs इसलिए लिखे गए हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी या फिर कोई भी और सिटीजन अपनी पावर का गलत यूज ना कर सके. So writs are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto. These are all the writs, and this is the answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.